Good morning, dear students. Today I'm going to start with the revision, as you already know, and you have got your timetable in your class WhatsApp group that from 21st of June you are going to have your PA1. So we are going to start with the revision for that PA1. Okay, let's start. Date is 14th of June 2021. Day is Monday. Subject is English language and topic is revision 1. So children, we are going to start with the revision of English language today. Okay, so in English language, as you already know, lesson number 1 to 4 will be covered in your PA1. So you have to do all the revise all the exercise that you have done in your copy in your book for your PA1. So let's start with lesson number 1. Lesson number 1 is naming words. Already know what are the naming words? The name of a person, place, animal or thing. So whatever exercises are given in the lesson, like this exercise, what you can see in the picture, different naming words are given. So you have to know what are the naming words. Okay, so naming words are the name of a, कोई भी चीज़ आपके आसपास दिख रही है वो सारे नेमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है, जिनका नेम है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, कोई भी चीज़ है आपके आसपास, सब कुछ नेमिंग वर्ड में आ जाता है. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल्स आर गिवन. पर्सन में आपके आंट, सिस्टर, फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी आ जाएगा. देन एनिमल्स और बर्ड्स में जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो उनके कॉमन नेम है सब आ जाएंगे. देन प्लेसेस में हाउस, स्कूल, पार्क सब आ जाएगा. ठीक है, सिटीज़ जो भी चीज़ें होती हैं सब, रोड्स, स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें आपके प्लेसेस में आ जाएंगी. देन थिंग्स में आपके शैम्पू, फ्लावर और जितनी भी चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही, जितनी भी चीज़ों के नेम है, दे आर ऑल थिंग्स, और वो सब नेमिंग वर्ड्स में आएंगे. सो नेमिंग वर्ड्स इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. Then the exercise is given. In this exercise you have to mark the naming words. Okay, so आपको जो भी इसमें एक्सरसाइज में नेमिंग वर्ड्स दिए गए, उर्मिला, मुंबई, women, then hair, then skirt, slippers, violin, toto, beer, forest, trees, honey, tourists, pictures, then boys, girls, all these naming words are there. And यू शुड नो कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है तो दैट मीन्स इट इज़ अ नेमिंग वर्ड और आपको बता देना है. ठीक है, तो ये आपको ऐसे आएगा कि आपको सेंटेंस आएगा तो उसमें आपको यू हैव टू फाइंड आउट द नेमिंग वर्ड्स एंड ऑप्शंस में आपको टिक करना होगा करेक्ट नेमिंग वर्ड्स. ओके, देन बी इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स. आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यू हैव टू फिल इन द करेक्ट नेमिंग वर्ड. सो आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से आ जाएगा, ऑप्शंस आपके पास रहेंगे. यू हैव टू टिक द करेक्ट नेमिंग वर्ड. लाइक समीरा इज़ अ यंग गर्ल. लेट मी टेक आउट एन इरेजर फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स. वी मस्ट कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी. मोस्ट किड्स लव chocolates. The birds live in a nest. The little girl bought 2 red balloons from the balloon seller. Then next is you have to find out whether that underlined word is a person, place, animal और thing. तो वहाँ पे भी एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से आ जाएगा कि आपको सेंटेंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू टिक वेदर इट इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. लाइक मार्केट इज़ अ प्लेस, dog is an animal, teacher is a person, chair is a thing, then dentist is a person and New Delhi is a place. So इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना होगा और टिक करना होगा करेक्ट आंसर. Then next is in context. This exercise will not come in your exam. I have told you repeatedly many times that in context exercise which is not given in your book, that will not be included in the exams. So this exercise will not come in your exam. You can skip the exercise. Okay, but practice the exercise for your practice work. Okay, for your revision work you can practice the exercise to learn more about the naming words. Then last is your my takeaway. The name given to a person, place, animal or thing are called naming words. Naming words are also called nouns. So this is the definition that you have to learn, and definition may come in any form. तो आपको जो भी डेफिनेशन में जैसे भी है उसको लर्न करना है ताकि आपको वो कभी भी काम आ सकती है, आगे चल के आगे की क्लासेस में भी काम आएगी. So learn the definition. Okay.
Okay, it is very important. Then in your classwork copy you had written the definition. A word used to name a person, place, animal or thing is called a naming word or noun. ओके, तो ऐसा वर्ड जिससे किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल और थिंग का नेम पता चलता है वो नेमिंग वर्ड या नाउन होता है. एग्जाम्पल्स आपको दिए गए पर्सन के, प्लेसेस के, एनिमल्स के, थिंग्स के, सबके एग्जाम्पल्स आपको, मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. देन यू नो दैट नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं. यही मैंने इसमें डेफिनेशन में ही बताया हुआ, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स. तो नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन्स आर सेम. नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स के नाम से भी जानते हैं या नेमिंग वर्ड्स. नाउ इट इज वी आर कॉलिंग इट नेमिंग वर्ड्स, बट बिफोर वी यूज टू कॉल इट नाउन्स ओनली. ठीक है, लेकिन अब हम उसको नेमिंग वर्ड्स भी कह देते हैं, बट इट इज स्टिल अ नाउन. In English language terms it is called nouns. Okay, then lesson number 2 is special name and common names. Common names and special name. You had written the definitions for common name and special names, like names given to a person, place, animal or thing in general. Remember, in general are called common names. यानी कि जो जनरली people, person, place, animal और thing के जो नेम होते हैं, like boy, girl, dog एंड सिटी, देन और क्या, स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है आपके कॉमन नेम्स हो गए. देन नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन पर्टिकुलर और कॉल्ड स्पेशल नेम. जब किसी पर्टिकुलर नेम होते हैं, जैसे अमित, मोहन, देन आप अपने पेट एनिमल्स के नेम रखते हैं, टाइगर और गुफी, वट एवर द नेम्स आर स्पेशल नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स, then it is called the special name. So general names are called common nouns, particular names are called special names. ठीक है, common names, general names are common names and particular names are special names. Remember the definition. Okay, learn the definition. Then in lesson number 2 you have been given the exercises where you have to see that Japan is a country, Cadbury is a chocolate, Bata is shoes, James is a boy, and Diwali is a festival. So match correctly. You can be given an option. You have to tick the correct option. Japan क्या है, Cadbury क्या है, Bata क्या है, तो you have to tick the correct option in your exam. Then there is definition is given, that what are the special names, like Japan is a special name, then Cadbury is a special name, Bata is a special name, James, Diwali, these are the special names, and boy, festival, chocolate, country, shoes, these are the common names. So definitions and as well as examples are given, that names that are given to a person, place, animal, bird or thing in general are called common names. Names that are given to a person, place, animal, bird or thing in particular are called special names. Then you can skip this exercise. This exercise is not very important. Yes, this exercise is also important. Here you have been given different examples of common names and special names. So you can go through the exercise to learn more about the common names and special names. Okay, like Tommy is the special name, book is the common name, bird common, car common name, carrot common name, boat common name, duck common name, plane common name, candle common name, Sapna is the special name, Christmas is the special name, Monday is special, helmet common, mango common, rabbit common. The next is the exercise where the sentences are given and you have to find out that what are the special names and what are the common names. The words which are underlined, they are the common names, and the word which have capital letter, which are starting with the capital letter, they are the special name. Like Reena is wearing a pink dress, here Reena is the special name and dress is the common name. Tony had a birthday party on Friday. Tony and Friday are the special names, birthday party is the common name. It is very hot in Kerala during the month of June. So Kerala and June are the special names, but month is the common name. It आपका pronoun है, वो noun है ही नहीं. So you don't have to point out it. Okay. Then fourth is Shruti's pet dog's names is Jojo. So Shruti is the special name, Jojo is the special name, dog is the common name.
Holi and Christmas are my favorite festivals. Then Holi and Christmas are the special names. Festival is the common name. Sheetal and Raghav are going to Nainital. So Sheetal, Raghav and Nainital. Three special names are given here. Sheetal, Raghav, Nainital. No common name is given here. Then Moscow is a beautiful city. So Moscow is the special name. City is the common name. Then next exercise is you have been given some कॉमन नेम्स और उसके उनके स्पेशल नेम्स आपको लिखने और सेंटेंसेस फॉर्म करने लाइक हेयर शी अदिति अदिति कैन सिंग वेरी स्वीटली प्लेस दिल्ली दिल्ली इज़ अ वेरी बिग सिटी बर्ड चीची चीची इज़ माई पैरट फ्लावर रोज रोज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर फ्रेंड सपना सपना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड then teacher Miss Sharma is our maths teacher parent Mrs. Geeta. My mother's name is Mrs. Geeta. So sentences will not come in your exam because you are having the MCQ, that is multiple choice question, not the subjective exam. So sentences you don't have to form, just learn the special names and common names. Okay, then in context exercise will not be included in your exam, so you can skip the exercise. And in the last you have been given this definition. The names that are given to a person, place, animal, bird or thing in general are called common names, like boy, city, tiger, crow, box. The names that are given to a person, place, animal, bird or thing in particular are called special names. Examples: Vijay, Shimla, Tommy and Cadbury. So the definitions are very important. Learn the definitions also. Then I had made some questions for you. आपके लिए मैंने कुछ questions बनाए हैं किस तरह से आपको exam में आएगा. So let's revise that also in your English language. This is a revision work. Lesson number 1 to 4 will be covered in your English language. The question 1 I have made that naming words are the name of a person, place, or person, place, animal or thing. So answer will be C, person, place, animal or thing. So you will tap the option C in your एग्ज़ाम. जो भी आपका एग्ज़ाम जब आप स्टार्ट करेंगे अपने मोबाइल पर कंप्यूटर पे तो आप सी ऑप्शन को टैप कर देंगे एंड इट विल बी रिकॉर्डेड. Then question 2, animals: dog, cat. Which belongs to the animal group? Mango, giraffe or table? Giraffe. So you will tap answer B. Japan is a boy, festival or country? Japan is a country, so you will tap answer number C. Tick the special name Monday, mango, rabbit. इनमें से special name क्या है? Monday है या mango या rabbit? Monday is the special name, so you can tap Monday, A option. So in the same way जो भी आपका correct option होगा आप उसे tap कर देंगे और आपका answer record हो जाएगा. So children, this is all for today. We are going to continue with our revision in our next class also. Thank you.